Jai Hind, welcome to Dev Talks. Today is a very, very special day. Brigadier Rajinder Singh Mahavir Chakra, the man who actually saved Kashmir in my eyes. Sir, Colonel Ajay Raina, who's going to take us through क्या हुआ था उस दिन पे and ये क्या story है of this man who saved Kashmir for India. Okay, A very, very Namaskar and Jai emotional. Hind. Yeah, sorry. Not also, I was Adi, saying little known stories है बहुत कम लोगों को पता है ये. हाँ जी. हाँ जी. इनफैक्ट आई विल स्टार्ट कि गॉड ब्लेस योर आई कि आपकी आंखों को इतना तो पता है कि आपकी आंखों में कौन सेवियर है कश्मीर इज यू हैव अ राइट असेसमेंट. अनफॉर्चुनेटली लाइक यू सेड दुनिया में देश में हमारे लोगों को नहीं पता, हमारे जम्मू कश्मीर में लोगों को नहीं पता. यू नो आई कीप टेलिंग पीपल की लड़ाइयां होती हैं दशकों में कई बार ना, सेंचुरीज में कई बार. ऑफ कोर्स वी लिव इन अ वेरी अनस्टेबल नेबरहुड, तो चलो हमारा 15-20 साल में एक बार कहीं ना कहीं हो जाता है. बट अदरवाइज यू लुक एट यूरोप एंड डेवलप्ड वर्ल्ड, पीपल जनरली डोंट फाइट. यूक्रेन इज एक्सेप्शन. बट एक नैरेटिव की वार होती है आदि जो चलती रहती है, और वो इतनी पावरफुल होती है कि लोगों का दिमाग घुमा के, लाइक if people don't know who saved Kashmir, it is only because of a war of narrative only somebody of many people who actually believe that somebody else saved Kashmir. So वो somebody else की तो हम बाद में बात कर लेते हैं. ब्रिगेडियर राजिंद्रा जो थे, as you know, he was the chief of staff of J&K state forces. Today, in fact, my article came in one of the papers giving out his life details, which are hardly known. So he belonged to a family of warriors. अगर आप जनरल जोरावर के बारे में पढ़ेंगे कभी, he had a very illustrious general called General Baj Singh. General Baj Singh, having commanded his battalion for Jack Reef, having become a general, जब उसको पता चला कि उनकी बटालियन चित्राल में जा रही है लड़ने के लिए, चित्राल में एक ना 19th century, towards the end of 19th century, a lot of chaos there. So he went along. He said, "मेरी battalion है, so I should," and he got killed in action there, never came back. So Brigadier Jindra's family is that lineage. His grandfather was a Fauji, his father was a Fauji, but unfortunately, when he was very young, he became an orphan because of untimely death of his parents. And उनके अंकल थे कर्नल गोविंद सिंह, जिन्होंने उनको पाला. अभी आप ये भी सोचिए, वो जमाना अलग था, यदि ना तो सोशल मीडिया था, ना इंटरेक्शन वही था जिस मिलते थे. आप एक अनाथ हो, लोग आपकी हेल्प तो करते हैं, बट यू मिस फ्यू थिंग्स, लाइक योर मॉम इज नॉट देयर, योर डैड इज नॉट देयर. तो उन्होंने अपनी पूरी जो अटेंशन थी ना, उसको रिलीज कैसे किया कि ही गॉट इनटू स्टडीज बिग टाइम. सो ही वाज अ वेरी स्टूडियस स्टूडेंट. So when he got commissioned, then he rose through the ranks. I'm telling you because there's certain things which we need to connect. Then twice he resigned. दो बार resign भी कर दिए. So you can make out a person who came up with from nowhere, literally, and then having got commission and having become a colonel and before that as a major, he resigned because he took stand. And वो जमाना तो अलग था ना, there was no court to run to, there's no tribunal to go and appeal. So if somebody on top didn't like your face, just too bad. So he said, hell with it, I am walking out. But his capability and his जो उनकी qualities थी उसके कारण महाराजा intervened twice and got him back. So person who has that kind of a frame of mind, who stands for the truth, what he feels is right, and then doesn't mind resigning commission. And he was involved heavily into social welfare, in the sense not that NGO kind of social welfare. गांव में किसी लड़की का कोई नहीं है तो because he himself was an orphan, so शादियां करवानी, बच्चों की स्कूलों की फीस पे करनी, and you'll be surprised many times his wife won't know कि ये कर रहे हैं. No, होता है ना ladies का, because you yourself are not very rich. आप खुद ही वाइट इनकम जो है, वाइट कॉलर जॉब उस जमाने में कितनी तनख्वाह होगी, एंड ओन डॉटर्स, whatever. So coming to this Kashmir, see, he was chief of staff, so you can equate him with, say, our chief of army staff today. Why should he go for, I mean, why did he go for battle, a battle which was being fought by 100 people? 100 जवान लेके गए वो. तो किसी भी स्टेट का, छोटी से बड़ी कोई भी स्टेट होगी ना, उसका चीफ 100 लोगों के कंपनी कमांडर की तरह नहीं लड़ता जाके. बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या था, जो फोर्ट जैकरिफ एक ही बटालियन थी जो पूरी वैली को डिफेंड करने के लिए, आई थिंक इसके बारे में मैंने पहले बात भी की थी, जो उरी और श्रीनगर एक्सिस है, जो मुजफ्फराबाद जहाँ पे स्टेट खत्म होती थी और पाकिस्तान स्टार्ट होता था, अहमदाबाद एंड डाउन साउथ, वहां एक ही बटालियन थी. उसकी 2 कंपनीज थी, दोनों मुस्लिम कंपनीज थी, और उस बटालियन की 2 हिंदू कंपनीज, एक कुपवाड़ा में थी, एक कोहाला में थी. ट्रेजेडी हैपेंड, times were bad,
things happen when religion जब खेलते हैं लोग तो कुछ भी हो सकता है. तो these two companies basically switched over other side, and this happened on 22nd October morning, सुबह सुबह. Like I told you, I think in last interaction, that Hindus and Sikhs were, they had been given day off because दुशहरा था, तो वो unarmed थे, सो रहे थे, उनको मार गया. So उससे पहले ब्रिगेडियर जिंद्रा had got information कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, because intelligence हर जगह होती है, जहाँ फौज होती है वहाँ intelligence होती है. तो he had told CEO of Fort Jackreef, कर्नल समयाल, नारायण सिंह समयाल, कि भाई ऐसे ऐसे खबरें आ रही हैं, वी हर्ड कि पाकिस्तानी ऑफिसर्स एंड जवान्स कबायली ड्रेस में नमाज पढ़ने के बहाने मुजफ्फराबाद में आ रहे हैं. उन दिनों बॉर्डर्स वर नॉट जैसे आज की तरह तो नहीं था ना कि बॉर्डर फेंस लगा हुआ है और सेंसर्स है ना, इट वाज ऑल ओपन, एंड पूरी सप्लाई ही वैली की वाया मुजफ्फराबाद आती थी पाकिस्तान से, द रोड वाज ओपन. सो कर्नल नरेंद्र सिंह नारायण सिंह, ही वाज अ डेकोरेटेड सोल्जर ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, सेम बटालियन. एंड वहां पे ऐसा एक सिचुएशन हो गई थी कि हिंदू कंपनी फंस गई थी और मुस्लिम कंपनी ने आके इनको रेस्क्यू किया था वर्ल्ड वॉर 2 में. सो दे हैड दैट काइंड ऑफ बॉन्डिंग, लाइक आई टोल्ड यू अबाउट कुक हाउसेस लास्ट टाइम. एक एक वहां से खाते थे, ऐसा नहीं था कि हिंदू लग से खाएंगे. ही से सर नथिंग, आई हैव नो रीजंस टू डाउट माय ट्रूप्स, और अगर आपको ऐसे शक पड़ता है यू कैन सैक मी, बिकॉज ही वाज टोल्ड कि मुस्लिम कंपनीज को श्रीनगर भेज दो पीछे एंड हिंदू कंपनीज को आगे कर दो, जस्ट टू टाइड ओवर, बिकॉज पुंछ में रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था. पुंछ में पीपल हैड ऑलरेडी स्विच्ड ओवर. But Colonel Narayan Singh actually put an officer on task to go and check, and unfortunately, that officer himself was the one who was part of that plot, and he said, "Sir, everything's all right." So it tragedy happened. 22nd वाला दिन जो था, कर्नल समयाल और उनके साथ जो 10-12 लोग थे बटालियन हेडक्वार्टर में, उन्होंने पूरा दिन उनको रोक के रखा. 22nd का दिन हो गया. बट जब मॉर्निंग में when मुजफ्फराबाद, अभी if you look at the map, मुजफ्फराबाद is across Kishan River. And this side of Muzaffarabad is called Dumail. Dumail in our language actually means where two things meet, two rivers or two roads. तो वहाँ दो रिवर मिलते हैं, झेलम एंड किशन गंगा. नॉर्थ से आता है, झेलम यहाँ से आ रहा है ईस्ट से. एंड दो रोड्स भी मिलती हैं, एक मुजफ्फराबाद से आ रही है और एक पाकिस्तान जाने का रास्ता और था कि आप दुमेल से लेफ्ट नीचे साउथ को चले जाओ पुंछ की तरफ, एंड देयर वाज प्लेस कॉल्ड कोहाला, वहाँ पे ब्रिज था, वहाँ पे एक्साइज और कस्टम की पोस्ट होती थी. तो इट वाज दुमेल में हेडक्वार्टर था. तो जब आगे वाली कंपनी सारी घिर गई और हेडक्वार्टर में सीईओ थे एंड वन अफसर वाज किल्ड इमीडिएटली, राम सिंह. सो उन्होंने मैसेज पास कर दिया कि वी डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड बट समथिंग इज गॉन वेरी वेरी रॉन्ग, एंड आगे सारा सब कुछ खत्म हो गया. एंड देन दे केप्ट ऑन फाइटिंग थ्रू आउट द डे. अराउंड आफ्टरनून में the CEO passed the last message कि I am blowing up my radio set, I'm going. I don't have any idea, but Fort Jackreef now doesn't exist. The battalion is gone. ये जो खबर जब पहुंची है सुबह वाली और ये वाली, इसके बीच में कश्मीर जो ब्रिगेड थी, see, Maharaja had Jammu Brigade, Kashmir Brigade. Kashmir Brigade had another brigadier who was a brigade commander. So logically, if at all a senior officer had to go, then Brigadier Fakir Singh would have gone, should have gone, जो वहां पे ब्रिगेड कमांडर थे. तो महाराजा ने पहले उनको बुलाया. He said, "Sir, मेरे बस का बात नहीं है." He was honest enough. At least he had moral courage to say, because he was from a cavalry unit, he had not fought like infantryman ever in life, and this was going to be total infantry affair. He said, "मेरे बस का नहीं है." For that I salute him. Like इतने guts थे to tell Raja on his face कि मैं नहीं कर सकता. Now Maharaja was in a dilemma कि मैं, how do I tell chief of staff? It's like today prime minister or president calling our chief and saying, army commander कुछ नहीं कर रहा, corps commander कुछ नहीं कर रहा, you go and fight. So it's that kind of a situation. So what Maharaja did, he called Brigadier Jindra to his house, his office, and when he went there, Maharaja was sitting with his uniform on, and he said, Brigadier Jindra, you coordinate things here. जितने लोग हैं दे दो, and I'm going to front to fight. Now, any self-respecting man will not allow his king to go and fight while he himself sits in the office and doing things with Delhi and whatever. He says, "Sir, आप यहाँ बैठो, and I'll go and take care." So when he comes out, you know who was his driver? His driver was his own cousin. So डोगरा इतिहास में soldiering is important, rank is not important. ये तो आजकल की modern times में change हो गए. तो his own cousin was his driver, a soldier. So he came and told him कि ऐसे ऐसे हुआ है, and Brigadier Fakir Singh नहीं जा रहे, and now I have to go. पर go with whom? There was nobody. तो वहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर था ऑफिसर्स का. तो these cadets who were there, they were issued डंडा because they had never fired. डंडा देकर उनको बोला कि आप डंडे पकड़ो और यहाँ पे कैंटोनमेंट की सिक्योरिटी गार्ड बन के करो, एंड वी गोइंग.
गाड़ियों में पेट्रोल कम था ही नहीं, बड़ा कम था। सिविल गाड़ियां अपनी गाड़ियां मिक्स करके हार्डली 100 people ही गैदर्ड ट्रुप्स एंड ही वेंट टू बारामूला। बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा। दे रीच बारामूला इन द इवनिंग। He spoke to the Tahsildar, he spoke to the locals there. They said, don't worry, we have come. Because rumors had already started coming. क्या है, बारामूला है, फिर उरी है, and then मुजफ्फराबाद है. So मुजफ्फराबाद had fallen. और वहां से लोग भाग रहे थे. मुजफ्फराबाद basically Sikh town. Everybody slaughtered. हाँ yeah, Sikhs were massacred. Nobody writes about that. मेरी किताबों में तो लिखा है, बाकी nobody mentions. पूरा township, they took the late females and Sikhs को bridge के ऊपर खड़ा करके they shot them and threw them in the river. There's a first-hand account, very painful account, is there in one of my books by Kashmiri Pandit who saw it, how it was happening, how massacre happened. So he went, told people, don't worry, we reached here now. There should be no panic, and we are going ahead. और वो चले गए उरी. उरी पहुंचे रात को, और उरी में रात को तो वैसे ही people are ready कि अब भागने की तैयारी करो, because आगे से लोग आ रहे थे भाग शरणार्थी, and they were telling him कि वहां पे रेप चल रहा है, मर्डर हो रहा है, all the looting which you know how these people do it. So वहां भी he told them, just take it easy. We are here now. So Uri also, a small town that time, Uri also got kind of under control. Early morning on 23rd, next day, Brigadier Jindra goes. Now there's no information. जो भी खबरें हैं वो rumors हैं. No, as a soldier he needed information. So he had only 2 platoons with him. People 33 platoon को उसमें छोड़ दिए just to take stock, and 2 platoon लेके brigadiers are in front. And at one point, a place called Gadi is a village. Gadi mein they can see ki mode, because if you ever travel along Jhelum Valley Road, the road is winding like this. As the river course ke साथ साथ road भी mountains में जाती है, फिर बाहर आती है, ऐसे typical happens in mountains. So from a distance they could see a long line of vehicles coming, trucks, lorries, everything. So there was an officer called Captain Prithi Singh. So he tells Brigadier Sahab, Captain Prithi Singh ko kaha ki take these 10 to 15 people and we go to the right along the river. River was. Sir, can I just stop you 1 minute, sir? Oh, I think there's a bit of a challenge with this video. I'll try and get him back online. Give me just a minute. He will be online in a minute. I think, he's been traveling and he's been kind enough to actually give me time for this video. But network issues, I think he's in Dehradun right now. So there is probably a challenge in terms of the network. I'll be getting him back online in a minute. It's a fascinating story. I mean, it's a crazy reality of things, what history has been taught us in terms of the Kashmir war, and the beginning of this entire dispute in 1947 is totally different from what Sir is telling us. It is okay, right? Sir is back. We'll just take him back online. Something happened. Sir, I want to start back from the place when Brigadier Rajinder Singh started, and वो bridge, and then we got cut off. So let's get to that point, sir. Okay. So Uri से वो आगे जाते हैं few kilometers, and at one point they could out a long line of a convoy of lorries, buses, all kinds of transport is headed towards their direction. So there's a blind turn. So Brigadier Rajinder Singh tells Captain Prithi Singh कि आप ये 10-12 जवान लेके जाइए, and you go to the right. There's a road going towards Muzaffarabad, and there's Jhelum to the right. So between Jhelum and the road, Captain Prithi Singh takes a party, and वो जो blind turn से पहले he takes position. There was another platoon under Subedar Duni Chand Sharma. Now, Duni Chand Sharma was a World War II veteran again. He is again given 30 people, and he's told, you go on to the left, because left was all mountains and hills. So there was a small hillock. He's told to deploy there. So Prithi Singh goes to the right, Duniram Sharma goes to the left, and Brigadier with a small party stays on the road. Now Captain Prithi Singh sees कि एक पहली गाड़ी आई, जैसे मोड़ काट के आई ना. So these guys open fire on that vehicle. Now these invaders have been told कि यहाँ force aircraft खत्म होगी, अभी कुछ नहीं है. You just go and looto, and we will by evening we'll catch Maharaja, and Maharaja से हम sign करा लेंगे instrument of accession, and J&K will be ours. So they didn't expect any army there. So once Captain Prithi Singh's party opened a fire, those people had a shock of life.
So they didn't know what to do. अब पीछे गाड़ी खड़ी होगी और पीछे blind turn है. Only one or two vehicles that come in front, बाकी गाड़ियां पीछे फंस गई. जैसे अभी आज मैं फंसा था, तो long jam. So what Captain Prithvi Singh did, he with couple of guys, he ran into that vehicle, killed the guys, took the steering, and started driving back towards Brigadier Saab. Unfortunately, look at the things. There was only one radio set, which was with Brigadier Rajinder, because he was the commander there. Prithvi Singh had no set. Dunichan Sharma had no set, radio set. So he couldn't even communicate. So as he came driving towards own troops, तो जो रोड के दोनों तरफ बैठे हुए थे, they started firing on his vehicle. And he got injured. One more guy sitting in front, अपना बंदा, he got killed. Then he took out his vest, white vest, and he waved. And he abused in the choicest of words. I am the one. Ruko. You imagine the pressure of today. Pakistan lost to Zimbabwe just a few hours back. The pressure of the moment. Aapki communication nahi hai. There's a fog. You don't even know what's happening, and suddenly you find a vehicle and udhar se gaaniyan pad rahi hain. Anyway, by that time, that vehicle had been so badly hammered because of our own guys that vehicle had become unserviceable. So what he did, he managed to just turn it around, leave it there to block the road, basically. And then he falls back. Now starts the battle. So Qubailis understand कि right side में Jhelum है and Jhelum के इधर बैठे हुए हैं, so they try to come from the rear as it is done कि outflank कर दो. Outflank जो ऊपर पहाड़ी की तरफ Dunichan was sitting full day, whole day fought. 30 guys there, total about 30 people, 6,000 Qubailis. And these people who were sitting on the hillock had no trenches, no defenses, no communication radio sets, nothing, just one LMG and those bolt action rifles. Because the only survivor of the battle, he's a Padma Shri. Later on, he became a very famous writer in Jammu. He got Padma Shri. He says, Tare aa gaye the, to there's a time and battle got over. That is, there's a time and everybody got killed. Dunichan Sharma and his party, nobody came back other than one guy who was taken prisoner. And Prithvi Singh had to be evacuated because he was injured again by own troops. And when Brigadier Saab was coming back, he had no ways to find out कि कितने ऊपर hillock पे कोई जिंदा बचा कि नहीं बचा, because there's no communication. Anybody who's been in battle ना, he'll tell you, I think, कि अगर आपके पास there's no way to communicate with people in front or left and right. I mean, it's a very bad situation to be. So when they withdrew and these guys were left, they had no ammunition left. So basically, those 3-4 people who were surviving, they were killed by those guys. So this happens on 23rd. So 23rd, by late evening, they fall back to Uri. In between, they try to find some place to deploy because, like I mentioned that time, ki, theek hai, aapne 300 movies dekh li, you appreciate that, Saragadi. At least they were forts. 300 mein, they were sitting on a bottleneck. Here it was just impromptu. Ekdam आमने सामने आगे कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं है, you're fighting. So Uri और इसके गड्डी के बीच में, they try to take up a position, but they don't find a good space. And वहाँ पे they take a break, and the Brigadier Saab has a loaf of bread as a ration, जो पिछले दिन से they were carrying without eating anything. बारामूला में जब रुके थे, तो people had tea there, chai and biscuit or something, which was served to them. Thereafter, they had nothing whole day. So he took out a loaf of bread and said, "Yaar, kuch hai, let's share this." So whosoever had biscuit, shakarpara, whatever they took out, and वहाँ पे there's a small water stream flowing. They took water from there. बस वो आधी थोड़ी bread खाई ले सबने बांट के. And when they came back, their own vehicle had a flat tire. So उसको वहाँ छोड़ा. अच्छा, वो कर क्या रहे थे, जो रिफ्यूजी आगे से आ रहे थे उनको अपनी गाड़ी में डाल के वापस भेज रहे, यू गो टू श्रीनगर, बाकी हम देख लेंगे. So it's a very selfless kind of a thing. जब उरी पहुंचते हैं रात को, शाम को, there was a bridge, it is still there, short of Uri. And now his tactical thing mind tells him that this is a place where we can actually stop them by blowing up the bridge. So they tell the guys in Uri कि आप चलो निकलो यहाँ से, जितना निकल सकते हो, we'll wait, and कल सुबह हम लोग इस ब्रिज को उड़ा देंगे. Now those invaders, in meanwhile, between Gari and Uri, there were small little villages. They got busy with those people, raping, plundering. Muslims को तो छोड़ रहे थे till that time. Anybody who was not a Muslim and of any different religion was being killed or whatever. So this explosive had actually been sent by Maharaja to Dumail, to Fort Jackriff. जो दुमेल पे जो ब्रिज था ना, मुजफ्फराबाद और
दमेल के बीच में, जहाँ से कृष्ण गंगा और झेलम, उसको उड़ाने के लिए लगाया, टू जस्ट टू प्रिपेयर इट, बट दे कुडंट रीच। तो उन्होंने यहाँ पे लगा दिया। एक सूबेदार ब्रीता राम थे, he died unfortunately recently. He was a guy who went and put the charges. Morning men, now they're sitting with mmgs and waiting for those guys. First those people come and they start plundering उरी काफी खाली हो चुका था उस टाइम तक, लेकिन जो भी बचा था, they'll pick up anything, utensils, cattle, whatever. They're looters, no, you can understand, they were not soldiers. So and Brigadier Jinder Singh said ki we will not fire the charges because they could see few civilians coming, trickling. At 6:37 in the morning, as the first vehicle came, the invaders, they blew up the bridge. So 2 days that bridge could not be constructed by them, because then Pakistan engineers had to come and do the, that's 2 days delay for vehicles. And these guys are fringed, they wanted to carry back the loot and ladies. These Kabylis were telling Pakistani army officers and JSOs who were commanding them कि हम गाड़ियों के बिना नहीं जाएंगे आगे, बिकॉज गाड़ी के आगे जाएंगे करेंगे क्या, दो लड़कियां पकड़ ली तो करेंगे क्या. So there were instances in Baramulla later on when they actually sent the vehicles back all the way to Peshawar. तो बोला श्रीनगर तक जाएंगे जब गाड़ियां वो लोड छोड़ के आएगी. नो, आज की डेट में जब हम ये बातें करते हैं ना, तो कई लोग विश्वास ही नहीं करते. आई मीन इट्स समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन, नो. जिनके साथ हुई है उनको only those guys can tell. So now they blow up the bridge, they fall back. So they take 2 more positions over next 2 days. महुरा में एक पावर हाउस था. अभी उस जमाने में कम्युनिकेशन थी नहीं. Mahura का जो पावर हाउस का, there was only one power house which used to supply electricity to Srinagar city and Baramulla. This power house still there. वहाँ जो employee था, he was from Baramulla. Before leaving for his duty in the morning, he had told people कि अगर मैंने invaders को आते हुए देखा, जो rumors हैं, अगर ये सच हैं, तो मैं उसकी लाइट बंद कर दूंगा. जैसे ही लाइट जाएगी, सप्लाई बंद हो जाएगी, आप समझ लेना कि आ गए. एंड जो भी बच्चे खुचे आप लोग जिनको थोड़ा सा होप है कि हम बच जाएंगे, आप निकल लेना यहाँ से. दैट वाज सिग्नल ही टाइड अप. जब उसने रात को अपनी गाड़ियां आते हुए देखी ना, तो ही हैड नो वेयर विदाउट टू अंडरस्टैंड कि कौन आ रहा है. ही ब्लू अप द पावर हाउस और बारामूला में पैनिक मच गया. वो अपनी गाड़ियां थी. तो ब्रिगेडियर जिंद्रा सिंह केम एंड ही डिप्लॉयड हिज पीपल देयर. सो 23rd, 24th, 25th, 26th दे केप्ट ऑन फॉलिंग बैक. 26th की रात तक आते आते ना, दे वर actually fatigued. There's no proper food, no rest. They've been fighting, and by now, these invaders having understood कि आगे आने नहीं देंगे रोड पे, they were trying to encircle them because Jhelum had few foot bridges. So some Kabylis crossed over from the bridges. Somebody climbed the mountains on the left, and they're trying to encircle. On 26th and 27th की रात को, there came a time when Brigadier Jinder Singh said, "Okay, now we getting back. वापस चल रहे हैं. Now next we'll fight at the outskirts of Baramulla. There's a place called Diwan Mandir, Baramulla से थोड़ा आगे. But by that time, those guys had put trees काट के ना, they knew this force is withdrawing in vehicles. तो उन्होंने रास्ते में पेड़ काट के obstacles बनाए हुए थे. So when these guys were coming back, they were orders for them. Brigadier Jindra told them कि you just bash through the obstacle. बस खबर आ गई थी कि पीछे obstacle लग गए हैं, you will not be able to get back, and just go and get deployed next to Baramulla. तो when the obstacles were cleared, they couldn't be cleared, and those guys were sitting on both sides and they fired like hell. उसमें Brigadier Jindra's driver died, so he started driving because those days not many people could drive. So he started driving himself. Then he got shot in his leg and right arm. So even he became immobile. So there was an officer called Captain Khajan Singh who was traveling with him. So he told his Jawans, let's pick him up and let's go. And he said, no, you guys go. I'm injured, and orders for me, because Maharaja had sent an order to him in writing saying you will defend Uri till last man last round. Now he had come back from Uri towards Baramulla. So this is what is called the right interpretation of orders. Because had he sacrificed himself in Uri, this delay of 3 more days wouldn't have happened. So he used his mind, but he knew that now we are running out of resources. He said, I'll be the last man. And there's a guy, Johan, who was injured and he was being sent back to Srinagar. He asked him, "Saab, koi mere madam ke liye koi message?" So he said, "Tell my wife that as directed by my ruler, I'll not be returning. I'll be the last man here. So इसके बाद आप बच्चे लेके श्रीनगर चले जम्मू चले जाना."
So he knew that. He was very clear in his mind that he will not be. So he, with his pistol, with one hand, he had his pistol, and there's a culvert. He said, "को यहाँ छोड़ दो और आप लोग जाओ." And thereafter, he was never found, never seen. Only his tie was discovered later on, much later, which I believe is still there in Regimental Museum. So between 22nd to 27th morning, these 100 Dogras, they were 100 at any given point of time, because initially when people died, few more reinforcements, yahan se pakda, wahan se pakda, they were sent ahead. Couple of MMGs. At any point of time, he never had more than 100 people. And out of 100, hardly anybody returned. Those who returned were injured. 27th morning, those guys enter Baramulla. Wahan they are welcomed by Muslim Conference cadres. Muslim Conference was the mother of National Conference. Sheikh Abdullah was earlier member of Muslim Conference. So they welcome them. And 9:30, our first aircraft lands, same day, lands at Srinagar. By 2 o'clock, Colonel Rai reaches outskirts of Baramulla, and the first time they see each other, and both the parties are shocked, because Colonel Rai was told, ऐसे कोई आया कुल्हाड़ी उल्हाड़ी लेके कुछ लोग आए हैं, go and throw them out. When he had MMG fire coming on to him, he understood कि ये कुल्हाड़ी वाली फौज नहीं है. And they were also shocked कि आर्मी कहाँ से आ गई, सिख कहाँ से आ गए, पगड़ी वाले. They used to call them पगड़ी वाले काफिर, बालों वाले काफिर. So this is how this delay of 5 days, if you include Colonel Narayan Singh's 1 day and 4 days of Brigadier Rajindra, this is what actually saved Kashmir. क्योंकि अगर ये वहां पे ना होते और ये 4 दिन ना लड़ते, so they would have reached Baramulla to Srinagar is one straight line. Even today, straight road. It was straight even then, that time. अभी लोगों ने फिर कहानियां बनानी शुरू की, which we'll discuss later. So if anybody saved Kashmir only, which is 15% of the state, it was Brigadier Rajendra Singh. Brigadier Pritam Singh saved Punch. Brigadier Usman took back Jangad. Colonel Parab, nobody knows his name. He and his party saved Leh, and Colonel Rinchin saved Nubra. So they were all saviors in their own uh, areas. But Srinagar was a prize, Kashmir was a prize, most important of all, power center. So state was saved by Brigadier Rajendra Singh. This is the actual story, who saved Kashmir. Speechless, honestly. I mean, it's a. And you It know, just. only Brigadier Rajendra Singh was awarded Mahavir Chakra much later. Nobody knows names of those 100 people who never came back, and who for like Subhadar Duni Chand Sharma. I mean, with 30 people, not even 30, this is half a platoon, 20 odd people sitting on a hillock, no defenses, nothing to protect you, and you whole day you're fighting. And when ammunition gets over, your rifles become useless, and then you're overrun, and you can't even inform your commander, sir, we are in this state, we need ammunition, because there's no communication. तो उनको पता ही नहीं है. There's a guy called Sai Ram. नीचे कोटली थी, कोहला की तरफ ना, there was a place called कोटली. वहां पे his platoon had revolted because half were Muslims, so they had switched over. But he was able to come out, and उस वहां भी गांव में सिख बहुत थे, तो पूरी सिक्स की फैमिली को लेके क्रॉस कंट्री करके he was marching towards Baramulla when he met Brigadier Rajendra Singh, who was going towards Gadi. And such people who had been able to extricate themselves from front and were coming back, protecting people with 100 people in the tow, they also rejoined Brigadier Rajendra and never came back. वो civilians को तो वापस पीछे भेज दिया, Baramulla and Srinagar. And these guys who were already tired, fatigued, we don't take pride in our deeds, Adi. There's no instance where 100 men rescued 10,000 civilians, 10,000 refugees, 5 days. They were fighting. Lieutenant Lab Singh. Again, nobody will know his name. Lieutenant Lab Singh in Kohala with one company of his troops and plus a total of about 100 people and 10,000 refugees, ladies, kids, elder people, wounded, ill, and 10,000. Imagine in mountains when there's a footpath, and they kept on getting ambushed for 5 days. So there was troops in front, troops in the rear, few in the middle, and wherever fighting takes place, they'll hold them, fire back, and these 10,000 people, he brought off all of them back to Punch.
So many of my relatives are part of that. What do you call it? Not a caravan, but I mean, these are stories which nobody bothers, and we don't have pride. We don't, sir. I mean, it's a funny thing that the whole story in the history books that is written is totally एकदम अलग है, and जो popular conversation में भी जो story है वो एकदम अलग है. It's not जो आप बता रहे हैं, it is about एक चीज हुआ, दूसरा चीज हुआ, तीसरा चीज हुआ और सब कुछ खत्म हो गया. It was, I mean, जो it's as simple, and यहाँ पर it's a story of valor कि Yeah. लोग खड़े होके लड़े, and in spite of knowing the fact, I think किसी को डाउट नहीं होगा कि हम बस यही है, हमारा घर है, हम यहीं पे Uh-huh. जाएंगे. They knew. They knew they'll not come back. Now, I think look at the narrative thing which I mentioned. Now, when Maharaja was, they created a villain out of Maharaja. Maharaja पे कभी episode करेंगे तो आप Maharaja Hari Singh, I am not related to him. I never saw him, but my forefather has seen him. My father has seen him. My relative. I mean, we were all part of his kingdom, and we were from a different area. Poonch was a different royalty, by the way. But Dogra dynasty we refer to Maharaja Gulab Singh, Maharaja Ranbir Singh, Maharaja Pratap Singh, and Maharaja Hari Singh. This was one lineage which was ruling Jammu. Poonch, our area, was being ruled by Maharaja Gulab Singh's brother's lineage. And later on there was a conflict, but सब हो गया. तो इनको तो विलन बनाना था because Sheikh Abdullah hated him. Nehru Sahab hated him because he had detained Nehru Sahab 1 year before that. So if you want to create a villain and tell people कि इन डोगरा ने कुछ नहीं किया, डोगरे महाराज भाग गए, डोगरी फौज ने कुछ नहीं किया, तो then you have to create a character or somebody ना whom you quote and say कि ये था जिसने बचाया कश्मीर को. Like any man with common sense will say महाराजा भी भाग गया, फौज भी भाग गया, तो ये कश्मीर बचा कैसे? अगर 6000 कबायली आ गए थे अंदर लूटने मारने के लिए, तो वो श्रीनगर सिटी क्यों नहीं पहुंचे, एयरफील्ड क्यों नहीं लिया, है ना? एनी मैन विद कॉमन सेंस कि ये 5 दिन का जो गैप है. सो बड़े प्यार से इन्होंने एक करेक्टर खड़ा किया, मकबूल शेरवानी. तो मकबूल शेरवानी वाज अ नेशनलिस्ट, देयर इज नो डाउट. इनफैक्ट वो शेख अब्दुल्ला का राइट हैंड था, लेकिन पीपल से कि वो शेख अब्दुल्ला से ज्यादा सेकुलर था. शेख अब्दुल्ला का सेकुलरिज्म वाज अ एजेंडा ड्रिवन थिंग कि मैं सेकुलर हूं तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस बना दी so that others also join up with me. I'll call him, he was a manipulator, he was a guy who could change minds of people. But this guy is 2IC was more nationalist and more secular than his boss, because this guy was actually he thought that whatever Sheikh is saying, that's gospel. But Sheikh also believes in that, which Sheikh never believed. Now इसने क्या किया था, जब जिन्ना साहब आए थे ना, जिन्ना साहब ने ट्रिप किया था पूरे जम्मू से एंटर करके एंड बिफोर 47. सो शेख अब्दुल्ला आल्सो वेलकम्ड हिम एंड श्रीनगर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उन्होंने इनवाइट किया, बिकॉज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बेसिकली मुस्लिम लीग in J&K, since there was a Maharaja's rule and they couldn't have Congress, they couldn't have Muslim League, so they had their kind of affiliates. So there was a people conference which was basically Indian National Congress का बच्चा. So Muslim League का बच्चा was Muslim Conference. So उस gathering में, because Muslim Conference was hosting Jinnah through and through, so Srinagar में there was a reception. यहाँ पे Sheikh Abdullah and Jinnah came on same stage. और नीचे आपस में लड़ पड़े वो MC और NC वाले. Kashmiri is a very emotional, very vocal people. When they get emotional, they ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं. तो Jinnah said, तू भी बदमाश है, तेरे लड़के भी बदमाश हैं. He told Sheikh, "You look at this, what is happening?" So Sheikh got very upset. Now this Sherwani, like I said, he used to adore Sheikh Abdullah, believe him ki as if he's my Krishna, I am his Arjun. What he did, by the time Jinnah reached Baramulla, this guy went and टूटे हुए जूतों का हार बना के स्टेज के ऊपर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जलसे में जिन्ना के गले में से जूतों का हार डाल दिया. दिस वाज 2 years before 47. फिर इसको मारने के लिए दौड़े. He jumped into Jhelum and he was rescued by boat, so he saved himself. Now these Pakistanis, when they came there later, there was a guy called he was an ex-major of Army Services Corps, ASC का था, Major Khurshid. Now this guy had left army and he was the
कमांडर ऑफ मिलिटेंट विंग ऑफ मुस्लिम लीग। तो वो जिना की पूजा करता था। सो वन थिंग ही न्यू कि यहाँ पे एक मकबूल शेरवानी है जिसको सॉर्ट आउट करना है। वैसे तो मारना ही है सबको, हिंदू और सिखों को तो मारना ही है, लेकिन मुस्लिम्स के बीच में वी हैव टू सॉर्ट आउट दिस गाय। एंड दिस मकबूल शेरवानी वाज नॉट देयर ऑन 27th मॉर्निंग व्हेन दीस गाइस केम एंड स्टार्टेड प्लंडरिंग बारामूला एंड विलेजेस अराउंड। चर्च का मैंने आपको पहले बता दिया था, रेप वगैरह कुछ नहीं हुआ था, किलिंग्स हुई थी। सो दिस गाय डेयर डेविल वो BMW बाइक उस जमाने में किसी की फ्रेंड की लेके, बिकॉज this guy I told you he had a lot of nationalist spirit and secular. So he was touring the areas, making sure कि जो Hindus हैं उनको बचा के रखो. He was telling Muslims कि कबायली आ रहे हैं, इनको hide the Hindu neighbors of yours. Don't hand over those guys to these people. So he was actually a genuine guy. But हुआ क्या जब बारामूला पहुंचा ना, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले तो वहां थे ही, उन्होंने बोला they told पाकिस्तानी ये है, here comes मकबूल शेरवानी. So he was caught and crucified, killed very badly, कील मार मार के 14-15 गोलियां मार दी, बारामूला चौक में टांग दिया उसको। फिर इंडियन आर्मी ने जाके आफ्टर ऑलमोस्ट 10 days व्हेन इंडियन आर्मी रीच्ड, सो ही वाज अ मार्टियर, देयर इज नो डाउट। उसने जान दी एक कॉज के लिए, कॉज वाज सेकुलरिज्म एंड नेशनलिज्म। बट नाउ यू इफ यू पोर्ट्रे हिम एज अ only guy who saved Kashmir, how could a person without weapon, without firing a bullet, could save Kashmir against 6,000 those frenzied, bloodthirsty guys carrying weapons and all kinds and looting What? people? So, so मकबूल शेरवानी था। मुकुल शेरवानी अच्छा लड़का था, 19 साल का बोलते हैं पीपल से, 44 years का था। शेख अब्दुल्ला का डिप्टी था तो 19 साल का नहीं हो सकता, बट एज इज इमटेरियल। ही वाज सेक्युलर यस, नेशनलिस्ट यस, बट डिड ही सेव कश्मीर? नो। जब ये आर्गुमेंट होता है तो कश्मीर वाले कहते हैं कि उसने बारामूला में जब कबायली रास्ता पूछ रहे थे कि श्रीनगर जाने का रास्ता कहाँ है, तो उसने उनको गलत रास्ते पे डाल दिया। नाउ these Kabylis were being led by army officers. They were being greeted everywhere by Muslim conference cadres, and they were being led by 4 Jacrif soldiers who were all locals, जो महाराजा की फौज के थे. They didn't have to ask. What I'm saying, उनको रास्ता पूछने की जरूरत नहीं थी, और एक ही हाईवे है श्रीनगर बारामूला, तब भी एक ही था, आज भी एक ही है. So again that story doesn't justify that उसने ये गलत रास्ता बता के आधे पौने घंटे में उनको गुमराह किया तो कश्मीर बच गया. वो 5 दिन किसने बताया, उसको गोल कर गए ये नैरेटिव करके. एंड जैसे कि 3 दिन बारामूला में प्लंडर होता रहा, नर्सिस का रेप हुआ. दिस स्टोरी आल्सो केम अप बिकॉज दे वांटेड टू कवर दैट टाइम पीरियड 3 days. द फैक्ट रिमेंस 27th की सुबह वो पहुंचे हैं, 27th को आर्मी पहुंची है. उसके बाद द कैप्टन प्लंडरिंग बारामूला while the fight was on near Magam and Patan. Patan was the next position where Indian army took position with state forces remnants between Baramula and Srinagar. उस टाइम वो प्लंडर होता रहा. लाइक आई टोल्ड, उनकी गाड़ियां वापस चली गई लेडीज लेके, फिर वो आता रहा, वो वहीं पे रहे, वो लूट मार करते रहे. दैट्स ऑलराइट. बट कश्मीर में टेक्स्ट बुक्स में स्टोरी डाली गई. शेख अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बने, टेक्स्ट बुक ऑफ कश्मीर कैरीड मकबूल शेरवानी स्टोरी. इट सेड कि मकबूल शेरवानी ने उनको रोका और 3 दिन उन्होंने रेप और प्लंडर, उन्होंने अपना मिशन छोड़ दिया, इसलिए वो लेट हो गए. तब तक इंडियन आर्मी आ गई. सो सच को झूठ के बीच में ऐसा मिक्स किया ना कि जो बच्चे हमारे साथ वाले और हमारे पेरेंट्स के एज के, दोज हु वर स्टडीइंग इन कश्मीर दैट टाइम, वी वर ऑफ कोर्स नॉट, दिस टेक्स्ट बुक्स वर ओनली इन कश्मीर. सो दे बिलीव इट बिकॉज जो बच्चे ने जो लाइक व्हाटएवर स्टोरीज वी रेड इन आवर टेक्स्ट बुक्स एज किड्स, वी बिलीव देम कि हाँ सच ही होंगी. बाद में जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई कश्मीर में, टेररिज्म आया, उससे पहले जनरल जिया उल हक डाइड इन एयर. जिस दिन वो मरा, उस दिन बारामूला में मकबूल शेरवानी के एक मेमोरियल था. आर्मी ने उसको, जब आर्मी बरीड हिम एंड देन कंस्ट्रक्टेड मेमोरियल, उसको 80s में तोड़ा गया. तब तक इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों को कहा था ये इंडियन नेशनलिस्ट था, जिसको पहले टेक्स्ट बुक में नाम डलवाया, बाद में उसको टेक्स्ट बुक से हटवा दिया गया 20 साल, 15-20 साल के बाद. जब शेख अब्दुल्ला वापिस आता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला साहब के फोटो आपने देखे होंगे विद JKLF गाइज इन POJ के, with all these Makbul Butt and all. उस टाइम सेम लीडरशिप और नेशनल कॉन्फ्रेंस टेल्स कश्मीरीज कि ये जो मकबूल शेरवानी ये तो गद्दार है, तो उसकी मेमोरियल तोड़ दिया. आज अगेन ही इज बीइंग प्रॉप्ड अप. आई एज अ military history student, I have only one thing to request government. You please grant him whatever you want to grant him. Yes, he was a nationalist, he was secular, he was a guy who loved India, he loved Hindu neighbors, all marks to him. But by calling him savior of Kashmir, you are
discrediting Brigadier Jindra and soldiers who gave up everything and never came back, वो गलत है. This is a twist, subtle twist. अब मुझे आप बताइए कि आप कश्मीर में पैदा होते हैं इन 80s एंड आपके घर में और आपकी बुक्स में पढ़ा जाता है कि मकबूल शेरवानी ने कश्मीर बचाया. इंडियन आर्मी बाद में आई, तब तक बारामूला वगैरह सब लुट चुका था, मुजफ्फराबाद लुट चुका था. तो डू यू ओ एनी थैंक्स टू एनीबडी? जिसे हमने खुद ही बचाया यार अपने आप को. हमारे बंदा मरा बेचारा मकबूल शेरवानी, और हमारी उनको बताया गया कि लेडीज की एक फोर्स बनी थी और मिलिशिया बनी थी. उसकी अलग ही कहानी है, बाद में बताऊंगा. वो नेहरू साहब का फोटोग्राफ है 48 में, जबकि वैली 10 नवंबर को कश्मीर से भगा दिए थे सारे इन्वेडर्स और थ्रोन आउट. So that militia never came into any battle. They didn't participate anywhere. Yes, Sheikh Abdullah had prepared a peace brigade to look after मैनेजमेंट ऑफ सिटी, बिकॉज चोरों ने चोरियां करनी शुरू कर दी थी. जैसे र्यूमर्स आ रही थी लूटमार मची है, तो लोकल जो गुंडे होते हैं दे आर स्टार्टेड रॉबिंग पीपल. तो वो काम किया था. बट यू अगेन ए कॉमन सेंस क्वेश्चन कि क्या जो श्रीनगर में पीस ब्रिगेड थी, बाय स्टेइंग इन श्रीनगर एंड डूइंग पेट्रोलिंग इन श्रीनगर सिटी, डिड दे सेव कश्मीर? डिड दे फाइट दो 6,000? नो, दे डिडंट. सो एक कश्मीरी बच्चे का दिमाग साफ कितना आसान है. बोला ना इंडिया ने कुछ किया, ना महाराजा ने कुछ किया, ना डोगरों ने कुछ किया, हमने खुद ही किया, खुद ही मरे. तो ही सेज हाँ. सो ही ग्रोज अप विद दैट माइंड कि व्हाई शुड आई बी थैंकफुल टू एनीबडी अदर देन कश्मीरी. हमें तो वैसे इंडियन बोलते हैं ना वो, कि इंडियंस को व्हाई शुड बी थैंकफुल. सो दिस सी हाउ इट, कहाँ का पॉइजन कहाँ जाके कहाँ गंद फैलाता है. और आज अगर जवान बच्चे कश्मीर के जो जो थोड़े बहुत हैं जो इंडिया के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते, दिस इज अ बेसिक रीजन. बड़ा कंफ्यूजिंग सा नैरेटिव है सर इनका. ये लोग एक तरफ तो बोलते हैं भाई कश्मीर को बचा लिया, दूसरी तरफ जिससे बचा लिया उसी के लिए लड़ रहे हो तुम. आई मीन यही तो ट्रिक है. ये कोई किसी के दिमाग में थोड़ा सा अगर सेंस हो, अगर उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करे, भाई आपको बोल रहे कश्मीर बचाया हमने. दूसरी चीज, अब कश्मीर को बचाने के लिए जिससे आपको हमने बचाया उसी से जाके आप हेल्प लेके अब कश्मीर में उल्टे काम कर रहे हो. तो फिर ये कहाँ का सेंस बना सके? बस यही है, जब कॉन्फ्लिक्ट बनता है ना तो फिर नैरेटिव्स बनते हैं, फिर लोग सच को भूल जाते हैं और जो एजेंडा उनके दिमाग में डाला जाता है उस पर काम करते हैं. अब आपने एक और वर्ड सुना होगा, कश्मीरियत. वाजपेयी साहब भी बोलते हैं, मोदी साहब भी बोलते हैं. आस्क एनी स्कॉलर ऑफ कश्मीर, एंड कश्मीर हैड अ वेरी गुड कल्चर ऑफ रीडिंग. आज भी ना कश्मीर में पढ़ने का रिवाज है. मेरी किताबें कश्मीरी ज्यादा खरीदते हैं जिसमें मैं ये सब लिखता हूँ. बाकी नहीं, डोगरे तो बिल्कुल नहीं पढ़ते. वो उनको बस बंदूक दे दो, तलवार दे दो, वी आर हैप्पी फाइटिंग, वी आर नॉट इनटू राइटिंग एंड रीडिंग. दैट्स अगेन इशू विद अस. Kashmiriyat word didn't exist anywhere. There's no mention of Kashmiriyat word in Kashmiri literature. And Kashmiri literature is very, very old. That Raj Tarangini, which is the oldest record of Kashmiri civilization, from there, even till Mughal, Jabbar, oh, these Afghans ruled, Sikhs ruled, Dogras ruled, उससे पहले Muslims ruled. There's nothing called Kashmiriyat. जब शेख अब्दुल्ला को जेल से निकाला और इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला का अकॉर्ड हुआ और शेख अब्दुल्ला साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया गया विदाउट अ सिंगल सीट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, बिकॉज बाय दैट टाइम पीपल हैड फॉरगॉटन. सी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है. तो नेहरू साहब ने अब्दुल्ला साहब को भेज दिया कोडाई कनाल, 10, 15, 20 साल वहीं बैठे रहो. कश्मीरी भूल गए उसको. दे हैड मूव्ड ऑन. इंदिरा गांधी ब्रॉट हर बैक बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, एंड शेख अब्दुल्ला डिडंट हैव अ सिंगल सीट. सो I think this is the only example in the country in democracy where you had a chief minister being supported by Congress, whereas chief minister was from national conference. एक साल के बाद इलेक्शन दोबारा हुए, he won the majority, and first thing he did was change the names of 800 villages. तो अगर कोई रामगढ़ था तो उसको बहरानपुर बना दिया गया कश्मीर में. People say 2,500 villages, but so उस बंदे ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और उस गवर्नमेंट ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की, कश्मीरियत, कि हम बड़े प्यार से रहते हैं. उसी कश्मीरियत का असर 10 साल के बाद हुआ जब सारे कश्मीरी पंडित को वहां से भागना पड़ा. बट you speak to government of India today, you see Bajpayee Saab's speeches, you see Modi Saab's speeches, you hear this word Kashmiriyat. तो आप सोचते हो यार इनको प्राइम मिनिस्टर को ये कौन बताता है यार, who is the guy who feeds? So these narratives run very deep. अगर पीएमओ को ये नहीं पता, that's the problem, कि अगर पीएमओ को ही नहीं पता
कि ये दे फ्रॉड है, भाई किसी स्कॉलर को पूछ लो यार, कश्मीर के किसी मुस्लिम स्कॉलर्स हैव सेड Kashmir, if at all you have to define, is a way of life where majority will rule and minority has to live with it. That is a way कि कश्मीर में रहना है तो हमारी तरह से रहो और गर्दन मत उठाओ, गर्दन झुकाए जीते रहो, ये है कश्मीरियत. बिकॉज दिस टर्म डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर. और हम इसको इंटरनेशनल में जाके फोरम से बोलते हैं कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत. इंसानियत तो हमने देख ली जो कश्मीरी पंडित के साथ हुआ. जमहूरियत, आई टोल्ड यू, चीफ मिनिस्टर विदाउट सिंगल सीट. And Kashmir was a word never existed. Have you overshot the time, Eddie? नहीं Like नहीं सर, last time? I mean I am just in a bit of a fix to figure out कि इसका पर्पस क्या था सर, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ इट इट इज पर्पस वाज टू टेक पावर, वो तो समझ में आता है, ठीक है. अभी जो टेक पावर, ओके, आई मीन there's this thing, but take power in a happy and prosperous stage today, you can kind of, if you need to, you can do better for yourself, but यहाँ पर तो आपने कचरा ही डाल दिया अपनी जगह पे. देखो इसमें ना एक साइकोलॉजी का बहुत बड़ा एंगल है. पूरी दुनिया में ना देयर इज नो एग्जांपल वेयर वन कम्युनिटी इज बीन रूल्ड बाय आउटसाइडर्स for 600 years in one row. Now when you, if you turn back and ask me, sir, what about Mughals ruling India? Mughals are basically ruling Delhi and Agra. With 20,000 troops you couldn't have ruled India. आज हमारी 12 लाख सारी मिलाम के 15 लाख फौज है ना. आज कोई डिक्टेटर आता तो इंडिया इवन कांट बी कंट्रोल इवन टुडे. So can you imagine that India was being ruled? It was all negotiated settlements with people. That's why Hinduism has survived. Britishers were traders, so East India Company जो भी है. But one community and one region where Islam came in 14th century, all were Hindus. They were converted. Those who could got away, they got away. Others converted. 600 साल तक इन पे पहले इस मुस्लिम्स ने राज किया, फिर अफगान अगेन मुस्लिम्स, फिर सिख्स आए, फिर डोगराज आए. टेक्निकली एवरीबडी आउट फ्रॉम आउटसाइड कश्मीर एंड दे डिडंट हैव अ सिंगल. कहीं नहीं आपको ऐसी एग्जांपल मिलेगी यार. मुगल्स के टाइम पे भी वी हैड आवर राजपूत राजाज इन रजवाड़ा. वी हैव गुजरात में अपने राजे, अहोम डायनेस्टी कहीं थी, सब कुछ था. बट दिस इज वन. सो इनके डीएनए में there's a thing कि मैं कश्मीरी हूँ और ये आउटसाइडर है. दैट्स व्हाई व्हेन यू आस्क देम कश्मीर अलग क्यों है, जैसे ना हम अलग हैं, वी आर डिफरेंट, तो वैसे कि राजस्थानी अलग क्यों नहीं है, पंजाबी अलग क्यों नहीं है, एवरीबॉडी इज डिफरेंट. इंडिया में तो हर कोई डिफरेंट है. बट इनके डीएनए में कि हमें बाहर वालों ने रगड़ा, चाहे बाहर वालों ने आके, महाराजा प्रताप सिंह ने इनके स्कूल बनवाए, महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर में प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी की थी 1925 में. आज भी इंडिया में कई जगह पे एजुकेशन कंपलसरी, आरटीए, वो राइट टू एजुकेशन तो है, इम्प्लीमेंट नहीं होता. सो whether these guys did good for them or bad for them, they always curse them. And ट्रेजिकली जब 47 में कश्मीरीज खुद आए रूल करने, महाराजा को बाहर निकलवा दिया एंड शेख अब्दुल्ला बिकेम पीएम, तो दे सफर्ड मोर. तो ये जो आप कह रहे हो ना कि ये हुआ क्या है, कि पहले आप 600 साल तो कुड़ते रहे कि बाहर वाले रगड़ रहे हैं, फिर जब अपने आए तो उन्होंने कोठियां डाली, लंदन में घर खरीद लिए, सब कुछ कर लिए, और आप वहीं के वहीं रहे. हाँ, आपको ये बोला कि बिजली का बिल मत देना. कश्मीर में नोबडी यूज्ड टू पे टिल नाउ, टिल वेरी रिसेंटली. बिल देने का तो टैक्स, लाइक बिजली का बिल, ये चीजें तो दे वर ऑल एलियंस. तो उनको वो लॉलीपॉप खिला दिया. और here I quote one example to help you understand the question you asked me कि क्यों क्या करते हैं. फारूक अब्दुल्ला went to अरुणाचल प्रदेश once. Dr. Faruk Abdullah, our chief minister, वहां पे while passing through one of the villages, लोकल्स को पूछा कि आपका ये गांव कैसा है, ना बिजली है ना रोड है, आप लोग कैसे जीते हो. तो लाइक आर नॉर्थ ईस्टर्न पीपल आर कूल, जैसे कि सर ठीक है चल रहा है. इसे नहीं नहीं, हमसे सीखो, कश्मीर से सीखो, कि जब हमें जरूरत होती है हम पाकिस्तानियों को बोलते हैं हम पे गोले फेंको, और दिल्ली में बोलते हैं पाकिस्तानी गोले मार रहे हैं तो दिल्ली वाले हमें पैसे देते हैं. नो, दिस इज अ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. दिस अ वेरी फेमस ऑथर कॉल्ड शिव कुणाल वर्मा. ही हर्ड इट फर्स्ट हैंड फ्रॉम द विलेज बुड्ढा जो होता है, विलेज एल्डर, द पंच ऑफ द विलेज. एंड ही सेड कि मेरे को वो कैसेट देना. द कैसेट ऑफ कोर्स ही डिडंट गिव. सो दिस डिफाइंस कि आप कॉन्फ्लिक्ट पैदा करो, जरूरत पड़े पाकिस्तान को ही बोलो कि हमारे अंदर टेररिस्ट भेजो, अंदर में गोलियां चलाओ, ताकि दिल्ली गिव्स यू मनी एंड दैट मनी गोज
wherever is supposed to go or not supposed to go. तो एंड ऑफ डे यार वही है कि गरीब आदमी कश्मीर में भी नॉर्मल आदमी रोटी के पीछे काम करता है, वही मार खाता है हर बार। और ये जो हुर्रियत वाले हैं, ये पॉलिटिशियन के बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई ज्यादातर फॉरेन में है, जो फॉरेन में है वो बेंगलोर में है, दिल्ली में है, और वहां पे जब वो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वहां वो अपनी शक्लें दिखाते हैं। तो फिर जब उनको पड़ती है तो फिर वो कहते हैं ये देखो जी नाइंसाफी होगी। सो एक ना इन रूट टर्म में गंद फैल गया हुआ है, कचरा कचरा फैला हुआ है। हाँ, आई मीन सिंपल बट इफेक्टिव टर्म है वो बड़ा जो कचरा, आपने बोला। के फॉर कश्मीर इज कचरा, ये मेरा एक ऊपर लास्ट ऊपर। क्वेश्चन, हाँ जी। इसमें बाकी सब समझ में आ गया, जो कश्मीर की स्टोरी, राइट सर, एंड उसके अंदर कहीं पे भी, एंड ये हमने वी डिस्कस दिस लास्ट टाइम आल्सो, पीओ की जो आपका गिलगित बाल्टिस्तान, तो मतलब वो था ही नहीं, वो तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मैं दे गिफ्ट में दिया, हाँ, हमने, वो तो पाकिस्तान। हम्म। मेजर साहब ने दे दिया उसको सब। बट मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि देखिए, सी द मेन क्राइटेरिया ऑफ कश्मीर जो था कि भाई अभी तो एक्सेशन हो गया, अभी ये झगड़ा झगड़ा चल रहा है, एक साल के बाद ये सब खत्म हो गया ना, हाउ डिड द पॉलिटिक्स प्ले आउट कि ये सब अभी जो स्पेशल स्टेटस सडनली क्रिएट हुआ था, ठीक है सर, एंड जो उसके बाद एक्सेसेस हुए उस स्पेशल स्टेटस के चलते हुए, ये कहाँ से बीच में आया सर? देखिए जब भी कोई पूछता ना मेरे को कि जब इंडियन आर्मी वाज थ्रोइंग आउट इन्वेडर्स, उनको क्यों रोका गया 14 नवंबर को, जब उरी में इंडियन आर्मी पहुंची और उनको पुंछ भेजा, भी डिस्कस अबाउट लास्ट टाइम। सो उस टाइम शेख अब्दुल्ला साहब है टोल्ड नेहरू साहब कि भाई इसके आगे तो बरेलवी है, हम देवबंदी हैं, कश्मीर फिनिशेस एट बारामूला। टेक्निकली देयर इज नो पार्ट ऑफ कश्मीर अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान। इफ यू लुक एट रीजन ऑफ जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू इज वन रीजन, इसका वो मीरपुर, पलंदरी, Ravlakoot, Bagh, everything is within POJK. You come to Uri Bowl, this was technically never part of Kashmir. Kashmir is never considered Uri. Uri वालों को पहाड़ी बोलते हैं। कृष्ण गंगा गुरेज तो वो दर्द वाली कम्युनिटी थी ऊपर गुरेज में, और कृष्ण गंगा में वो पहाड़ी थे। कश्मीर में the word used for them is पार वाले, the people from across these mountains. So for them, Kashmir is only Baramulla. That way, technically, there's not even an inch of land with Pakistan. It should be actually POJG. पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड गिलगित बल्तिस्तान। बट लुक एट द नैरेटिव, दुनिया पीओके बोलती है विदाउट इंच ऑफ स्क्वायर इंच ऑफ कश्मीरी थिंग है। सो क्या है, जब ये कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, महाराजा हैड started this state split system in 1942 to protect demography of state, because these guys, Muslim conference guys, were importing uh, uh, non J&K Muslims into J&K, basically to change demography. What Pakistan has done in POJK later on. POJK में भी कश्मीरी बोलने वाले बचे ही नहीं, वो सारे उर्दू बोलते हैं। तो so now when this 47 thing was happening, the day attack came on 22nd October, उसके 4 दिन पहले शेख अब्दुल्ला का स्पेशल एनवॉय मिस्टर गुलाम सादिक, who became minister later on as chief minister also, he was sitting in Karachi waiting for a meeting with Jinnah to make last ditch effort, because शेख अब्दुल्ला had told Jinnah कि मेरे को आप कश्मीर का गाजी बना दो तो मैं कश्मीर लेके आपके पास आ जाऊंगा। Jinnah, I told you, Ismaili secular, he said FO, he said no, not required. तो इसने अपना अपना एनवॉय भेजा, एनवॉय वहां बैठा हुआ था, यहाँ पे अटैक हो गया, इन्वेजन हो गया स्टेट का, एंड विद लॉट ऑफ डिफिकल्टी दैट गाय कुड कम बैक, उसको अरेस्ट कर लिया था पाकिस्तानियों ने। सो जिन्ना न्यू कि उधर तो शेख अब्दुल्ला न्यू कि वहां तो होने वाला कुछ नहीं। सो second pawn in his hand was Pandit Nehru, who was blinded by his love. So to safeguard his constituency, to make sure that this state of Jammu and Kashmir does not become part of India psychologically, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो ही स्टार्टेड इंसिस्टिंग कि इसमें एक सेक्शन डालो जिसमें स्टेट सब्जेक्ट शुड कंटिन्यू। अभी आप देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी ना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाली, उसमें तीन कश्मीरी लीडर थे। इफ यू लुक एट द पॉपुलेशन और टेरिटरी ऑफ इंडिया, देयर शुड हैव बीन ओनली वन गाय। बड़ी बड़ी स्टेट से एक थे, हमारे 3 थे। सो मच वाज अ लव फॉर शेख अब्दुल्ला कि जो बोला अब्दुल्ला साहब ने वो नेहरू साहब ने मान लिया।
जब ये 27 तारीख को जब फौज आनी थी और जो नेगोशिएशन चल रही थी महाराजा के साथ, उस टाइम अब्दुल्ला साहब नेहरू साहब के घर में रह रहे थे। ही वॉज हिज पर्सनल गेस्ट। ठीक है, इतना इश्क था। अब जब इश्क था तो फिर लोग बातें करते हैं ना, पीपल से कि भाई दे आर रिलेटेड, they had some blood relation, DNA relation, courtesy Motilal Nehru. I'm no one to say this because I don't know. I don't have evidence. So why? But this is a belief. Many people have written about it. There are books which try to connect Abdullah's and Nehru's because of Motilal Saab, who was very well off and used to visit Kashmir very often. कितना सच है हमें नहीं पता, so there's no point. तो अपनी कि मैं इंडिया में तो फंस गया बिकॉज जिन्ना ने लात मार दी, फिर उन्होंने अटैक कर दिया, पाकिस्तान से मिल नहीं सकते, तो इंडिया के अंदर ही रह के अपनी शर्ट के बटन खोल के राज करूंगा, प्राइम मिनिस्टर बोलूंगा अपने आप को, चीफ मिनिस्टर। वो तभी हो सकता था जब ये 370 होता, मतलब सम आर्टिकल होता, तो उसने वो आर्टिकल 370 का डलवा लिया। और नेहरू जी ने बोला, उस टाइम नेहरू एंड पंडित पटेल साहब की काफी ज्यादा कश्मीर के ऊपर वैसे खुंदक थी, पटेल हैड टोल्ड हिम कि डोंट गो टू यूएन, डोंट मेक द अनाउंसमेंट ऑन रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, बट ही मेड इट। एंड दैट टाइम पंडित साहब वाज गोइंग अब्रॉड फॉर अ विजिट, जाते हुए ही टास्क्ड हिज डिप्टी सीएम या डिप्टी पीएम पटेल साहब कि ये करवा देना। अंबेडकर वॉकड आउट ऑफ द मीटिंग in protest. He said, if you do this, you are going to create another Pakistan. But then Patel said कि नहीं, पंडित जी ने बोला डाल दो. So this was done not for the well-being of locals, not for protecting anything, but nothing had to be protected actually. Done to safeguard own interest in state and to have that kind of freedom कि जो मर्जी कर लो, पंचायती राज नहीं लगाना, आरटीए नहीं लगाना, so many things which you don't like जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना स्ट्रीट्स पे अच्छे रूल्स पे, तो यहाँ तो सिंपल था, 370 लगाना ही नहीं, नो प्रोटेस्ट, तो fiefdom basically. And he had that thing कि एक दिन आएगा, because when you have that kind of independence, वो तो जल्दी चले गए ऊपर, नहीं तो अगर 10 साल हो रह जाते ना, तो यहाँ इतना बुरा हाल हो जाना था कि इंडिया ने बोलना है कर ही दो, कश्मीर को इंडिपेंडेंट ही कर दो, चलो पाकिस्तान को नहीं देना, इंडिपेंडेंट कर दो, पाकिस्तान से मिला के क्रिएट अ स्मॉल स्विट्जरलैंड और समथिंग, UN kind of a. That was. The Kashmir has been misconstrued to be this entire big region. इतना सा तो जगह है सर, छोटा। देख लो 15% है पूरी स्टेट का, और फंडिंग देखो आप कहाँ पे खर्च हुआ। If you, I mean, the state which always got maximum funds were 8 times money coming to J&K was 8 to 10 times more than what normal states of same population size were getting through the history. और वो गई कहाँ? Jammu has never been developed. Ladakh didn't have a college, university. Ladakh, 70% of the state of Ladakh, geographically, Leh and Kargil, Ladakh, Leh and Kargil districts. वहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए जम्मू और कश्मीर और बाकी पढ़ने आते थे, because there was no college there. अब भी यूनिवर्सिटी सैंक्शन हुई है, नो मेडिकल कॉलेज, नो इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वही था ना कि जो मर्जी इंडिया में है एनी पॉलिसीज, J&K में वही लगेगा जो हमें पसंद है। और जब आप ऐसे करते रहे तो हम अलग हैं करते करते ये हालात आ गई कि लोगों ने सोचने शुरू कर दिया कि हम अलग हैं, और फिर उनको सडनली पंडित बुरे लगने लगे, बिकॉज उन्होंने नहीं बोला हम हैं, उन्होंने बोला हम हिंदुस्तानी है, बोला इनको दफा करो, निकालो बाहर। दिस इज व्हाट वन थिंग लीड्स टू अनदर थिंग, एंड आई एम टेलिंग यू, अगर शेख अब्दुल्ला 10 साल और जिंदा होता तो बहुत तबाही हो जानी थी, वो तो चला गया। Sir, one or two questions this person is asking. This people surprising that Pakistan keeps talking about. This to me has been a failed dream. इनको अकल नहीं आई है। I mean, see the contradiction, एक और contradiction जो बाहर निकलता है, I'm sorry, just take half a minute sir, कि ये गए थे जी पाकिस्तान, हम लेके आए हैं आपके पास, ठीक है जी, अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तान ने लात मार दी और साथ में अटैक कर दिया वही चीज लेने के लिए। वो तो लेके आया था आपके पास, आपने उसको भगा दिया। क्योंकि अब्दुल्ला साहब की कंडीशन थी ना, ही वांटेड टू बी गाजी ऑफ कश्मीर, ही सेड मुझे कश्मीर का गाजी बना दो। दैट मींस कि पाकिस्तान विल गिव अ स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर अंडर अब्दुल्ला। स्पेशल दोनों जगह से चाहिए था, ये नहीं मैं। हाँ, हाँ।
So Jinnah was intelligent enough. He said no, because he could पागल foresee what Nehru Sahab couldn't foresee. That's the catch. उसने कहा चल यहाँ से नहीं तो यहाँ ले लेते हैं. वहां गाजी बोल रहा था, यहाँ 370 नाम लगा दिया उसको, गाजी ना काट दिया, बस काम तो गाजी ने किया ना. पेपर वर्क पक्का होता है ना, उधर पे पेपर वर्क नहीं होता इतना. हम्म. सर सो पीपल्स अपराइजिंग सर, या क्या है ये जो बोलते रहते लोग? पीपल अपराइजिंग, देखो देयर इज अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. पुंछ में अपराइजिंग हुई थी. पुंछ में when World War II broke out, 60,000 people. आई एम फ्रॉम पुंछ ना, तो हमारे हमारे लोग लड़ाके हैं, लड़ने वाले लड़ाकू. पीपल से कि पुंछी साला खुद तो मरेगा, साथ में तेरे को भी लेके मारेगा. दैट काइंड. दे डोंट केयर whether you are Hindu, Muslim or Sikh, सारे एक जैसे हैं. 60,000 troops, young guys, 18, 16, 17, 18 years old, they were recruited by Britishers for World War II. This was the biggest in terms of numbers from one region, entire country. Punch was a Punch Mirpur, 60,000 boys were picked up to fight for Britishers. उन दिनों उनके मनी ऑर्डर इतने ज्यादा आते थे कि जो मीरपुर में पोस्ट ऑफिस था, it couldn't handle money orders because 60,000 money orders आते थे उनकी पे. तो British was very particular about this, so they had to post additional staff. As the World War II ended, Britishers gave them one rifle each. बोला 3 मैगजीन, एक हथियार रखो, thank you, go back, war is over, we can't sustain you. So now those guys who are now just about 20 years old, and till now they were earning, money order आ रहे थे, घर वाले भी खुश थे, खुद मारने मुरने का भी शौक पूरा हो गया था. Now they are भरी जवानी में, they are unemployed, but they have a weapon. So Britishers had promised कि जिस जिस स्टेट से लोग आएंगे लड़ने के लिए हमारे पास, हम उनकी वेलफेयर के लिए कुछ करेंगे. So some money was given to all the states from where these troops, volunteers had been taken. So the money was given specifically for development of the area. ठीक है. तो जब जम्मू एंड कश्मीर में पैसा आया, तो that पैसा was supposed to be spent on constructing roads, schools, all those hospitals in that Punch Mirpur area. Punch Mirpur, like I told you, already had some issues with Jammu royalty, तो वैसे issues थे. प्रोपेगेंडा जो मुस्लिम पुंछ में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बहुत ज्यादा होल्ड था. एंड पुंछ के जो मुस्लिम्स हैं वो अपने आप को पंजाबी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं. एक तो वो बरेलवी हैं, ऊपर से वो कश्मीरी नहीं बोलते, तो पुथारी लैंग्वेज जो हमारी लैंग्वेज इज अकिन टू, आई मीन क्लोजर टू पंजाबी. तो उन्होंने क्या किया, एक प्रोपेगेंडा किया वहां पे कि महाराजा आपका पैसा खा गया, जो पैसा आपको जेब में डालना. आज भी इंडियंस में हमें एटीट्यूड है यार. गवर्नमेंट कहती है ना कि अभी तो डायरेक्ट ट्रांसफर शुरू हो गया, अदरवाइज व्हेनेवर गवर्नमेंट सेज कि मैं 50,000 करोड़ का पैकेज दे रहा हूँ जम्मू कश्मीर में, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है मेरी जेब में कितने आएंगे. वो सड़क बनेगी, स्कूल बनेगी, वो तो बनेगी, वो तो छोड़ दो. एवरीबॉडीज बोल मेरे जेब में 15 लाख हो, कई लोग तो 15 लाख मोदी साहब से आज भी मांग रहे हैं 8 साल के बाद. सो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, एंड देयर वाज अ अपराइजिंग व्हिच एक्चुअली हैपेंड इन पुंछ. एंड व्हाट यू हैव वेपन्स, यू हैव यंग ब्लड, यू हैव अम्युनिशन, एंड देन यू हैव मुस्लिम लीग. जेएलएम के उस तरफ मुस्लिम लीग बैठी है, यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है. तो महाराजा ने क्या किया, डिसआर्म करने के ऑर्डर दे दिए throughout the state. He said, deposit all your weapons and only soldiers will carry weapons. उसमें फिर पुंछ में गड़बड़ शुरू हो गई. Their weapons were withdrawn. So they went across and they पाकिस्तानियों ने इस प्ली पे उनको वेपन दिए थे कि देखो इन बेचारों से हथियार ले लिए. So there was an uprising which actually happened in Punch that time, and that's why Azad Kashmir government was created in Plandri, my mother's village, जो भी POJK में. कश्मीर में uprising never happened. Because Punch is, I told you, they're different language, different culture. 47 में Pakistan thought मैं uprising, मतलब that time they thought they'll take it by force, they couldn't. 65 में they thought they will, because 65 that infiltration of about 10,000 commandos and Rajakars and volunteers into Kashmir, Punch, all these area happened. Before that 4-5 महीने प्रोपेगेंडा चलता रहा आजाद रेडियो कश्मीर पे, because that आजाद कश्मीर is heard everywhere in Jammu border belt. सो उन्होंने अपराइजिंग करने की कोशिश की. अब कश्मीरीज का मैं बताऊं एक बात आपको, कश्मीर वेरी इंटेलिजेंट पीपल. हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, दे इंटेलिजेंट पीपल, दे नो. आज भी ना अगर आप पूछोगे, सो कॉल्ड प्लेबिसाइड कराओगे, मे बी सम पीपल से वी वांट टू बी फ्री. यू आस्क देम कि फ्री हो तो कहां से कमाओगे, कहां से खाओगे, यू हैव नो फैक्ट्रीज, नथिंग, दे हैव नो आंसर. पाकिस्तान में कोई नहीं जाना चाहता. वो झंडा वंडा, आई टोल्ड यू फारूकुल्लाह की बात ना, कि हम पाकिस्तान वालों को बोलते हैं बॉम्ब मारो ताकि दिल्ली से पैसा आए. तो जब उनको कुछ बताना होता है ना, वो पाकिस्तान के झंडे, आईएसआई के झंडे, आईएस का क्या रिलेशन है आईएस के साथ, कश्मीर के साथ. तो दीज आर बेसिकली
कि हम कश्मीर, हम पाकिस्तान जिंदाबाद, हम वहां जाना चाहते हैं, इट्स ऑल प्रोपेगेंडा. They're intelligent enough. They will never rise against Indian state in favor of Pakistan. They will rise against Indian state to make a point, because then Indian state comes on to knees and बोलती है हाँ जी गलती, आप बताओ क्या चाहिए, कितने हजार करोड़ चाहिए, खाओ कश्मीरियत वर्ड इन्वेंट करो, सीएम बना दो बिना सीट के. एंड दे अंडरस्टूड आवर साइकोलॉजी. कोई अपराइजिंग वाइजिंग कुछ नहीं. पुंछ में हुई थी, उसके बाद कभी नहीं हुई. 65 में भी नहीं हुई. लोगों ने पकड़ पकड़ के तो कमांडोज आर्मी के हवाले किए. इंडियन आर्मी केम टू नो दैट कमांडोज हैव कम ओनली बिकॉज़ पीपल केम एंड टोल्ड अस. ये तो फौज थी कहाँ, आर्मी, देयर हार्डली एनी आर्मी इन कश्मीर दैट टाइम 65 में. Sir, last question is, we'll go through this one, is could you please throw some light on Governor George Cunningham's concerns about sending Kabalis to J&K? जॉर्ज कनिंघम को 3 गवर्नरशिप के 3 टेनर्स दिए गए थे, which was unique in the sense that he was given 1 tenure, second tenure, then he went back, then he was recalled. He was a person who had got that committee made, which I referred last time, कि पूरे फ्रंटियर एरिया से आप रेगुलर ट्रूप्स निकाल दो एंड गिलगित स्काउट्स, त्राल स्काउट्स, तोची स्काउट्स तैयार करो, बेसिकली कि नॉन मुस्लिम ट्रूप्स को वहां से निकाल दो. दिस गाय वाज प्लेइंग गेम बिहाइंड द सीन. सी, एटली नेवर वांटेड इंडिया टू बिकम इंडिपेंडेंट. दिस इज अ नोन फैक्ट. इलेक्शन हार गया था, तो उसने माउंटबेटन के साथ जो उसका चीफ ऑफ स्टाफ था लॉर्ड इसमें, ही वाज एटलीज मैन. तो माउंटबेटन आल्सो हैड ए मोल. अगर माउंटबेटन चाहता भी टू हेल्प आउट इंडिया, ही हैड ए मोल इन फॉर्मर लॉर्ड इसमें, who was at least man in his secretariat, चीफ ऑफ स्टाफ था उसका वो. तो ये कुनिंगम, इसमें ये जो गैंग है ना, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता. These are people who played a game. See, Mountbatten goes to Kashmir in month of June and tells Maharaja, if you want, you can go to Pakistan. Nehruji will have no problems. Nobody in Delhi will have any problem. Why should British say that? And वो महाराजा उसको मिलते नहीं, कहते मेरे पेट खराब हो गया, वो ये कहानी है, बट कहीं भी पढ़ लेना, लूज मोशन बहाना, बिकॉज ही वांटेड टू अवॉइड हिम. तो फिर लॉर्ड इसमें बाद में गया कि चलो वो नहीं तो मैं मिल के आता हूँ. तो वो शेख को भी मिला और महाराजा को भी मिला, एंड सेम थिंग ही टोल्ड. तो ये जो कनिंगम था, जब ये टाइम आया 47 48 का, तो वहां पीर मनकी करके उसने एक हार्ड लाइनर पीर को पकड़ा, एंड विद हिज हेल्प ही सेड, तो पीर मनकी ने ना पर्चियां काट काट के भर्ती शुरू कर दी. लाइक आई से कि आई वांट टू फाइट, ही विल गिव मी पर्ची. दैट पर्ची इज एक्चुअली माय authority to, I can travel anywhere. These 3 districts of affected districts of Pakistan from where these people came, they were merged into one division. Pakistan did a lot of things. पहले उन्होंने कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूव में प्रॉब्लम ना हो जाए कि इधर से हथियार लेके जम्मू वाला, लाइक इन आर, लाइक यू से दैट संगरूर डिस्ट्रिक्ट और पंजाब वाला वो मोगा में क्यों जा रहा है हथियार लेके, डीसी कैन कंप्लेन नो. तो पहले ना तीनों डिस्ट्रिक्ट मर्ज कर दिए, created one division commissioner under Cunningham. He was a governor, ताकि people could move out, move freely. तो उनको पर्ची देता था मन की, उनसे आई थिंक 1 रुपया लेता था फीस, कि 1 रुपया मेरे को दो और मैं तुम्हें पर्ची दूंगा. उस पर्ची को दिखा के यू कैन गो एनीवेयर एंड यू कैन एक्चुअली कैरी वेपन अराउंड. एंड हथियार तो बाद में दिए पाकिस्तानियों ने. और इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तानी की स्टोरीज पढ़ो 47 48 के टाइम पे, उनको कितनी परेशानी हुई, बिकॉज ऑल दिस गाइज वो लूटिंग कश्मीर. एट वन पॉइंट स्टार्ट लूटिंग पीपल इन पाकिस्तानी पंजाब. बस खून जब मुंह लग जाता है ना. I told you they never identify themselves to be Pakistanis ना. These Pathans, they have no love for Pakistan. तो उन्होंने वहां भी गुंडागर्दी की थी, बाद में बड़ी मुश्किल से काबू करना पड़ा. 48 के बाद तो पाकिस्तान had his own issue. They had revolt in 51. Same people who revolted in Punch, उनके जो लीडर्स हैं ना, और उसमें हमारा जो फैज अहमद फैज, फेमस पोइट जिसको बॉलीवुड वाले बड़े प्यार करते हैं, he was arrested. There was revolt in Pakistan by same guys. तो इनका बिजनेस था. तो कुनिंगम चला गया था उस टाइम. और मैं आपको एक और मजे में बताता हूँ, जो विलियम था ना, विलियम ब्राउन, व्हेन ही हैंडेड ओवर गिलगित बल्तिस्तान टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टोल्ड हिम थैंक यू, गुड बाय, कैरी ऑन, कि यू आर महाराजा's एम्प्लॉय, वी डोंट वांट यू. उसको निकाल दिया. ही नाउ ही डिडंट नो व्हाट टू डू. तो उसको ब्रिटिश ने तो दे दिया अवार्ड, बट ही, अब रोटी तो खानी है. तो ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ फर्म इन पाकिस्तान, and that firm had business in relation with somebody in India. तो एक बार वो कलकत्ता आया for a business meeting. There were few Sikhs there who recognized कि he's the guy who got our 6 brothers killed in Gilgit, and he was bashed up and left dead, but मरा नहीं था वो. कलकत्ता के कपड़े फाड़ के मार के उसको मरा हुआ समझ के फेंक के गए थे. कर्मा caught up with William, and फिर उसको बाद में then he went back to England.
तो कर्मा तो सबको पकड़ेगा, इनको भी पकड़ेगा, बट होता क्या है कि कर्मा के चक्कर में इनोसेंट मारे जाते हैं। कश्मीर में ये हो रहा है, I mean, इनोसेंट मारे जाते हैं। it's been the saddest story of this whole thing कि ये जो personal politics जो आपने story बताई है sir, and it's demeaning. उससे कोई better word नहीं है मेरे पास कि ये जो पूरी जगह है उसको आपने एक object बना दिया है, उसको आपने I mean cell phone कमोडिटी, commodity बना दिया, exactly. आपने उसको एक चीज बना दिया जो आप बेच रहे हो और कुछ नहीं है, बार 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 बार। सर आई मस्ट से काफी सारे लोग भी बोलते हैं, आई थिंक आई एम वेरी कन्विंस्ड टू से आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स आर रियली सुपर। आई मीन द वे आप इसको आप यू नो यू framed it in a way. I mean, one person has actually written that it's like live action in front of my eyes. So thanks. I tell you, Adi, honestly, I don't prepare. You know how I'll end up for this. नहीं sir, यही I think यही please keep it like this because this is a very real discussion. और आपने जिस तरह से स्टोरी बताया, इट्स समथिंग व्हिच इज रियली रियली वंडरफुल टू हियर एंड टिल द लास्ट मोमेंट जब तक एंड आई नो द स्टोरी ऑफ ब्रिगेडियर राजिंदर, बट टिल द टाइम यू वर टेलिंग मी, जब तक गोली नहीं लगी थी मेरे को लगा नहीं था, यू नो दैट ठीक है, इट्स लाइक यू वाचिंग अ मूवी एंड सेइंग यार ये निकल जाएगा, कोई बात नहीं, यू नो कुछ hero always comes back. Hero always comes back in Indian movies, but he decided not to come back. He could have come back. He could have come back. He said नहीं आना मैंने, महाराजा ने बोला last man, I am the last man. Another person says there should be a similar movie made to the Kashmir files just on this story. So let's see, there's things are happening. Yes, sir. I'd like to hear more and more stories, and I'm sure a lot of people will also. Of course, these are endless topics, so these are not, you know, they will keep on getting views for time to come because these stories are not going to go away. So thank you so much, sir, for one the prep and two the, you know, पूरा जो आपने जिस तरह से break down करा है. I will look for more feedback from as a matter of fact, this feedback came from one of our viewers. So we will wait for some more feedback coming from our viewers and we'll plan another topic, sir. As a matter of fact, हम लोग बात कर रहे थे 62 के बारे में actually, but let's see. We'll fix with the 62 and we'll go forward, sir. Thank you, Adi. You're doing a wonderful job. You're doing a wonderful work, and we all will go. But what you're doing and leaving behind will probably create some difference somewhere. I'm very sure. Keep up the good work. God bless you. Same here. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Jai Hind. Namaskar.